Now, National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021. This was announced in the budget. Okay, I took the lecture of budget and you can go through the budget lecture as well. And this was announced in the budget of 2021 कि एक development financial institution will be made for the financing of infrastructure in the country. ठीक है. This budget has allocated the highest amount of budgetary allocations to the infrastructure. Okay, and to meet the other needs of the infrastructure financing, this bank is going to be set up. This is not a conventional bank in the sense that it does not take deposits. Okay, what it does not take deposits from common people. It is not a retail bank. Rather, it raises money and it invests in infrastructure projects and it also earns from them. तो यहाँ पे दो चीजें कर रहा है ये बैंक. It raises money, that is it works in financial sector development, and the second one is it invests in infrastructure, that is in infrastructure. मतलब इस बैंक के दो काम होंगे. The first one is development of financial markets, the second one is development of infrastructure. Now we are going to take up the bill. What is NBFID? The first one is development. It is a development financial institution, nothing more. There's no rocket science. Simple. It will be raising capital for infrastructure, lower rates. अब lower rates पे क्यों? Because it is backed by the government itself. Government securities का rate of interest low होता है. क्यों? क्योंकि they are government, they are gilt edged. The rate of default in a government security is very low. Okay, so the risk coverage is low. Okay, that is the risk associated with the government security is low because governments rarely default except in case of Greece. Yes, Greece की government ने बहुत तगड़ा default किया था. But since it is being backed by the government, the interest rate on the loan that it might raise will be low. ठीक है, because interest rates reflect the kind of risk that the lender is taking. It does not take deposits. It does not only provide financial help to the infrastructure sector, but also technical support. ठीक है, technical support in the sense in preparation of detailed project reports. Okay, in preparation of consultancy services. ठीक है, has lower rate of interest because government backing. ठीक है, these are the features of a development financial institution. So this is not for the first time that government is going to implement make a development financial institution. There are already many kind of development financial institutions present in India. One of them is SIDBI, Small Industries Development Bank of India. It is very similar to NBFID. ठीक है, तो जो SIDBI का काम है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए है. ठीक है, इट ऑल्सो रीफाइनेंसेस दीज बैंक्स जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के फाइनेंसिंग में लगे हुए हैं. Similarly, NBFID will also refinance those banks which are already in the sector of infrastructure financing. Now, there's some kind of development financing institutions I have mentioned here. The first one is National Development Banks. अब हर एक का एक एग्जांपल अगर हम देखते चलें तो इसका होगा SIDBI. ठीक है, first I explained what are the traits or what are the characteristics of a development financial institutions. Now I am taking examples कि what kind of development financial institutions are already there. ठीक, the first one is National Development Bank, that is maintained by SIDBI. National Development Bank, an example is SIDBI. The second is sector specific bank, IDBI. Yeah, ICICI. Industrial Development Bank of India. This is Small Industries Development Bank. This is Industries Development Bank. It is sector specific. Okay. Investment institutions. अब investment institutions में क्या होता है? LIC. What LIC does? LIC के पास huge corpus of money है. वो क्या करता है? वो बहुत सारे projects में invest करता है. And then it earns from those projects. Not only it invests in projects of infrastructure, it also invests in financial markets. And then it gets return on that. And then ये अपने जो policy holders हैं उनको returns देता है. LIC, pension funds as well. Now pension funds are also having huge corpus of money with them. ठीक है, तो pension funds LIC are called investment institutions. And state finance corporations. State finance corporation मतलब हर state का अपना financial corporation जो भी है, जो कि industries financial, ये सारे examples. Okay, तो ये हो गया कि development financial institutions basically है क्या.
What is NBFID? NBFID is a development financial institution. Okay. Now we are going to study about the structure and the bill that particularly talks about the establishment of NBFID. The first one is authorized share capital of rupees 1 lakh crore rupees. Share capital. Authorized share capital. Now what is the share capital? शेयर कैपिटल मतलब पूरा इस पूरे NBFID का वैल्यूएशन टोटल, इन द सेंस दैट कि इसकी पूरी अगर शेयर होल्डिंग सबके बीच में बांट दी जाए, है ना, तो टोटल वैल्यूएशन इसका 1 लाख करोड़ रुपीस आएगा. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव 100% शेयर इनिशियली, दैट इज in the very starting only. It is not going to become 1 lakh crore rupees bank. Okay. In the starting, it will start from a smaller value and then it will gradually transform into a 1 lakh crore share capital bank. Fine. So in the central government will have 100% shareholding in the initial. ठीक है, जितना भी शेयर इन्वेस्टमेंट करेगी वो सारा गवर्नमेंट करेगी. Okay. And it will be reduced subsequently to 26%. ठीक है, इट विल बी गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग बाद में कहां तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, 26% तक. बाकी द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ओके, इसकी शेयर होल्डिंग विल बी गिवन टू अदर पीपल. फॉर एग्जांपल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स, LIC, कॉर्पोरेट्स. ओके, तो इन सारे लोगों को इसकी शेयर होल्डिंग बांट दी जाएगी. ओके, नाउ the ownership will be transferred to multilateral institutions. What are multilateral institutions? For example, ADB, Asian Development Bank, or NDB, New Development Bank, ठीक है, और World Bank. It is also a multilateral institution. Sovereign funds जो companies के अपने wealth funds होते हैं, countries के अपने wealth funds होते हैं, ठीक है. For example, Dubai is having a very huge sovereign wealth fund and they are investing in the infrastructure projects all around the world. तो सॉवरिन वेल्थ फंड्स भी इसमें अपनी शेयर होल्डिंग ले सकते हैं, पेंशन फंड्स भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक गोल्डमैन सैक्स, एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स कैन आल्सो टेक द शेयर होल्डिंग ऑफ द NBFID, बट इनिशियली ऑल द शेयर होल्डिंग विल बी विद गवर्नमेंट. इट विल बी अलाउड, NBFID विल बी अलाउड टू रेज कैपिटल बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड इन द कंट्री. ठीक है, एंड बोथ विद इन both in Indian rupees and in the foreign currency. ठीक है, इंडिया का फॉरेन डेट जो है, सॉवरेन डेट जो कहते हैं, ठीक है, वो बहुत कम है. तो इंडिया के पास काफी लेवरेज है टू टेक एक्सटर्नल लोन्स या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. ठीक है, तो इट इज ऑथराइज्ड टू रेज लोन इन बोथ रूपी डिनोमिनेटेड लोन्स एंड बोथ जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन्स हैं वो भी. करेंटली इंडिया के पास फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन्स में डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स हाईएस्ट हैं, फिर येन है, फिर SDR. प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. Now what is the structure of organization? The first one is chairperson appointed by central government in consultation with the RBI. Second is there are up to 3 managing directors, again appointed by central government in consultation with RBI. Okay, 2 directors nominated by the central government. Okay, up to 3 directors elected by the shareholders. Up to 3 directors elected by the shareholders. अभी तो पूरी shareholding government के पास है, so this will also be done by the government. But when the shareholding is being transmitted or transferred to other entities like multilateral banks, multilateral institutions, investment banks, corporates, तो उन सारे shareholders का भी एक 3 directors होंगे जो कि वो अपने में से elect करेंगे. And independent directors as specified. Independent directors जो कि इस बोर्ड के मेंबर नहीं होंगे, बट दे विल बी इंडिपेंडेंट, दे विल बी आउट फ्रॉम द आउटसाइड. ओके, नाउ सपोर्ट rupees 5,000 crore to the NBFID by the end of this financial year, that is by the end of 2021. Rupees 5,000 crore will be given to it by the central government, and the central government will guarantee when NBFID is going to raise money in the international market. Okay, so central government will guarantee its loan, because when you are going to raise a loan, तो आपको इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है. अगर आपको गवर्नमेंट बैकिंग कर रही है तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस वेरी हाई है, तो दैट इज आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वैसे भी कम हो जाएगा.
But when here it is saying that कि guarantee a concessional rate of interest up to 0.1% for borrowing from multilateral, जो multilateral institutions हैं like ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, अगर NBFID इन लोगों से बोरो करती है तो 0.1% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट देगी. अब 0.1% will sound very low, very small, but if this NBFID is going to borrow to 5,000 crore rupees from, for example, World Bank, then उसका 0.1% very high होगा. Can guarantee the bond, debt and other financial instruments. Okay, NBFID can also raise money by issuing bonds and debts. ठीक है. And costs toward insulation. When, for example, when this is NBFID is going to borrow in the international market, then the loans that it borrows are subject to the fluctuation of interest exchange rates. है ना? For example, if the NBFID borrowed 100 crore loan in dollars, okay, 100 crore डॉलर का लोन अगर कंपनी ने इसने लिया है तो इट विल हैव टू पे सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट. अब वो इंटरेस्ट डिपेंड करेगा इनकी एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है ना. इफ द रुपी डिप्रिशिएट्स तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इफ रुपी अप्रिशिएट्स तो हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इन दैट केस गवर्नमेंट इज गोइंग टू गारंटी दैट जो फ्लक्चुएशन होगा है ना, क्योंकि फिक्स रेट पे तो होगा नहीं कि अगर 3% या 2% भी इंटरेस्ट रेट है, दैट विल बी 2% विल बी इन, अगर डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है तो दैट 2% विल बी इन डॉलर डिनोमिनेशंस, एंड डॉलर डिनोमिनेशंस विल बी, बट फ्रॉम इंडिया इफ यू गोइंग टू पे इट बैक तो किस में होगा, रुपी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में. एंड देन अगर इंटरेस्ट रेट जो कि जब एक्सचेंज रेट जब लोन लिया था अगर उससे एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर गई है तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो NBFID को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योर करेगी कि गवर्नमेंट विल पे, अगर फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस की वजह से एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है NBFID को, तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि गवर्नमेंट पेज फॉर द फ्लक्चुएशन. ओके, नाउ दिस इज काइंड ऑफ दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि हाउ दिस NBFID इज गोइंग टू रेज मनी फॉर इटसेल्फ, है ना. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज NBFID. This is, for example, ADB, and this is market. First of all, this is government. Government will provide some funding, for example, rupees 5,000 crore. Okay. And when this NBFID is going to take loan from ADB, okay, so government will subsidize that loan up to 0.1% of the interest rate that this bank is charging on NBFID. Second one is the second way of raising money is when NBFID, अब NBFID क्या करेगा, बॉन्ड छाप के मार्केट में बेच देगा. ठीक है कि मैं 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड छाप रहा हूं. अब बॉन्ड, व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. ओके, बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड is a debt instrument. Bond is nothing but a promissory note, you can say. For example, rupees 100 का अगर बॉन्ड है, ठीक है, तो it will pay a monthly interest of 10%. ठीक है. Now that interest is charged upon the face value. This is face value and this is interest rate. 10% is too high. For example, okay, 10% is the interest rate. ठीक है, 10%, 10%, 10%. Okay, that means अगर ये बॉन्ड है, इस पे लिखा हुआ है इसकी फेस वैल्यू 100 है और 4 साल इसका मैच्योरेशन टाइम है, और हर साल के एंड में ये 10% इंटरेस्ट पे करता है बॉन्ड. ओके, एंड इफ आई गिव दिस बॉन्ड टू समवन, दैट पर्सन विल गिव मी 100 रुपीज, एंड आफ्टर 4 years I will give the 100 rupees back to the person, and during 4 years, at the end of every year, I will be giving him 10% of rupees 100. This is the phenomenon of bond. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने बॉन्ड से लोन लिया किसी और से, एंड आफ्टर 4 years I will be paying him the principal value of the bond, that is rupees 100, and along with the interest, that is 10% of rupees 100.
Every year, at the end of every year, I will be paying him rupees 10 as the form of interest. Okay. नाउ अगर यही बॉन्ड छाप के 500 करोड़ रुपए के एनबीएफआईडी मार्केट में लॉन्च कर देता है, तो in that case also the government is going to help it for raising money. ठीक है? So this is the way the NBFID is going to raise money. Okay. Now there are exemptions from investigation, so that there was a committee on banking reforms, and it recommended that the board or the people who are in the public sector banks should be isolated from the investigation that might take place when the board members or the directors of the banks are taking economic decisions. Okay. मतलब अगर किसी बैंक का जो डायरेक्टर है वो कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है, एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ बैड डिसीजन, ही शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट इकोनॉमिक डिसीजन. या फाइनेंशियल डिसीजन या इकोनॉमिक डिसीजन अगर कोई बैंक का डायरेक्टर ले रहा है, तो ही शुड बी गिवन freedom of making choice, and he should not be prosecuted if that decision turns out to be bad. Similarly, to provide such kind of exemption from investigation, no investigation can be initiated against any employee of an employee of NBFID, this bank, if that employee is a chairperson, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा, एंड अगर वो कोई और पर्सन है, ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और किसी और के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का एक सैंक्शन चाहिए होगा, प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस ऑफ करप्शन और एनी सच थिंग्स. Even courts are debarred from taking cognizance of any offences under this bank without the prior sanction of the central government. That is, the government has tried to insulate it and make it on at par with the corporate banks, है ना? So that the directors and the chairperson can be able to take freely such economic and financial decisions which are better for the governance or better for the development of this bank. Okay. Functions: extending loans and advances for infrastructure projects. The first and very most important function is taking over of refinancing such existing loans. Financing, okay. Refinancing मतलब अगर कोई existing loan है उसको refinance करना restructure करके, ठीक है. Attracting investment from private sector investors. Okay, investment from private sector investor कैसे कर सकते हैं कि अगर private sector इस बैंक में शेयर होल्डिंग ले ले, then that private sector will also benefit from the investment that NBFID is going to do in infrastructure projects or financial market. So that will help attract investors to invest in NBFID. Organizing and facilitating foreign participation, because it can raise funds in the foreign markets also. Facilitating negotiations with various government authorities, because it will be a very comprehensive body in dealing with finances and technical matters as well. Providing consultancy services in infrastructure finance. It will also provide technical and consultancy services to the companies or the infrastructure projects that are taking place. Okay, that is the end of the lecture. I hope you enjoyed it. If you have any queries, please comment in the comment section. I shall be more than happy to answer them. Thank you. Last slide पे रुक गया.